Hello and welcome to Bottom Line. Well, there is no end to the row over the Arunachal Pradesh Public Service Commission's Assistant Engineer Civil Examination question paper leak case, with the APPSC gearing up for its next course of action if its ultimatum for suspension of APPSC officials is not met. The state government on its part has already recommended a CBI probe into the case besides setting up an investigation by the SIC. But that apparently does not satisfy the protesters. So what is the way forward in this fiasco? The government has already taken multiple steps. However, there has been a number of protests in the last couple of weeks over the APPSC paper leak case. And in the last week of September, the APPSC and ANIA together served a 7-day ultimatum to the state government saying that if the APPSC officials, the board is not suspended within a week, then they will resort to agitation and may also take the law into their hands. To discuss this issue, I'm being joined by Advisor, Department of Tourism and IPR, and a BJP MLA, Laisem Semai from Arunachal, General Secretary and Spokesperson of Arunachal Pradesh Congress Committee, Bem Maching, is also joining me from Itanagar. But let me first go to APPSC General Secretary Ritum Tali, who is joining me over the phone. If we have Ritum Tali, welcome. Welcome to Bottom Line, welcome to Northeast Live. Ritum Tali, APPSC ने अल्टीमेटम दिया है गवर्नमेंट को फॉर सस्पेंशन ऑफ APPSC ऑफिशियल्स, and ये जो इंसिडेंट है, the APPSC पेपर लीक, it has come as a shock to the student community, to the youths of the state. इस तरह के जो इंसिडेंट है ओवरऑल क्या इम्पैक्ट होता है is something that I want to ask you, because the APPSC has given a big ultimatum to the government. Actually, we being the apex body of the state, we never tolerate such type of practices in our state. ये एपीसीएस का जो अभी जो लीकेज है, तो एक्चुअली ये जो है हम लोग का बहुत यूथ्स को एक्चुअली बहुत क्या बोलेगा कि वो लोग का लाइफ का ऊपर वो लोग खेला गया है. तो हम क्या चाहते हैं कि ये जो है एपीसीएस जो क्लीन होना है, क्योंकि टुमारो आवर जनरेशन इज इन द हैंड ऑफ एपीसीएस कमीशन. तो हम लोग कमीशन को ये चाहता है कि जैसे भी करके इसको इस बार हम लोग रेक्टिफाई करना है, और APPSC ऐसे बीइंग एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट हम लोग तो कभी टॉलरेट नहीं करेगा. Ritum Tali, incidents like these also have a lasting effect on the morale of the candidates, as we have seen a number of protests already over the paper leak. Is the APPSC doing anything on that front? Of course, I will not ask you. I'll not ask you anything about what after the ultimatum. I'll definitely wait for the ultimatum to be over. But incidents like these do have an impact on the morale. क्या कहना चाहेंगे आप? जो है कैंडिडेट्स है, यूथ्स है, थोड़ा अपसेट हैं, काफ़ी अपसेट हैं एंड फीलिंग डिमोरलाइज्ड. तो इसके लिए क्या चाहते हैं कि दिस टाइम वी आर प्लानिंग टू क्लीन ऑल द मतलब प्रॉप प्रैक्टिसेस इन द स्पेशली इन द कमीशन. तो हम लोग को इसलिए गवर्नमेंट को भी मांग रखा है कि एपीसीएस का कमीशन का रिसप्लिंग करने के लिए. तो गवर्नमेंट से अभी तक तो नया कुछ कॉरेस्पॉन्डेंट तो नहीं आया. ये नया आता है तो हम लोग का तो अल्टीमेट दिया ही है, तो हम लोग उसमें बाद में चर्चा करेंगे आपस में. But again, Ritum Tali ji, state government led by CM Pema Khandu has already recommended a CBI probe, SIC probe किया गया है, करीब 9 अरेस्ट्स हुए हैं. So the government भी अपने तरफ से जो है पूरी कोशिश कर रही है. अब CBI probe विदाउट एनी डिमांड गवर्नमेंट के लिए हम CBI प्रूफ रिकमेंड कर रहे हैं. अरेस्ट भी हुए हैं और जो सारा है अरेस्टेड में से आप APPSC के ऑफिशियल भी हैं. सो डू यू थिंक अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस इट इज़ नेसेसरी टू डिमांड द सस्पेंशन of a number of all APPSC officials, APPSC board? हाँ, हम लोग का तो एपीसीएस ऑफिस का सस्पेंशन का मांग किया है. बट देन आपका ये जो हम लोग का मांग में ही हम अभी स्टिक रह सकता है. कल को आप जब गवर्नमेंट से या अल्टीमेटम जब डेट खत्म हो जाएगा ना, उसी दिन आप पूछने से हम दूसरा मेरा नया डेवलपमेंट के बारे में बता सकता है. फिलहाल तो मैं कुछ भी कमेंट्स नहीं करेगा. ऐसे कमेंट्स होने से क्योंकि
मेरा कमेंट्स आपका स्टेटमेंट बन जाएगा मतलब। जी बिल्कुल, I'll not ask for you, as I said, I'll not ask for you for any comment on what after the ultimatum. Lastly, Ritum Taliji, any appeal or reassurance to the youth of Arunachal that things will improve? Everybody is trying, we are made to believe here, be it the youth student organizations like yours. The state government has recommended a CBI probe. The opposition is also on the matter. So can we hope for things to improve in near future? मैं तो वही यूथ से यही कहूँगा कि हर एक अभी एक ने गलती किया है तो हमेशा गलती होगा, वो भी नहीं है। हम लोग का प्लानिंग है कि सिस्टम को सही ढंग से करेक्शन करके काल जो डिजर्व है, तो जो डिजर्व एस्पेरेंट है वो लोग को मिलना है, जिसको मिलना है। और उसके बाद जो इसलिए मैं यूथ को तो ये कहना चाहेगा कि आप डिसहार्टेन मत होइए, तो आप जो है अपना पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। कल आज ऐसे एक महीना या कुछ ऐसे होता है तभी उसके बाद तो इंटरव्यू तो रिक्रूटमेंट तो चलना ही है, स्टेप चलना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रितुम ताली जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इफ आई कैन गो टू Lysam Semai, Advisor, Department of Tourism and IPR and a BJP MLA from Arunachal. Mr. Semai, the APPSC paper leak case, as you know, is heating up in Arunachal. Of course, as I just mentioned, the government led by CM Khandu is taking a strong note of it and has already recommended a CBI probe. But despite this, organizations like APPSC have served an ultimatum calling for suspension of APPSC officials and are also demanding judicial inquiry. Despite government odds, the efforts, the organizations are vocal. Your reaction to this, what would you like to say to them? Thank you very much, Northeast Life. Let me first brief you a little bit back about the fiasco, what has happened in the APPSC paper leak scam. It happened in August 28, and when a person, one boy, has reported it, written FIR to the Itanagar police station, immediately the Secretary Public Service Commission has lodged an FIR against the incident, and the Capital Police swung into action by registering the case. After that, a preliminary inquiry was done by the Capital Police. On 11th of September, after a few days of the registration of the case, the main accused was arrested. And further on interrogation by the police, he revealed some more names who were involved in this case. And later on 15th of September, 2 more accused were arrested. And on 16th, another 2 more were arrested by the Capital Police. And on 20th September, 1 more was arrested. And the total of 6 people has already been arrested by the Capital Police, and all are under the police custody. Now coming to the point, the government of Arunachal Pradesh, led by our Honorable Chief Minister, Pema Khandu ji, is a very seriously involving and seriously looking into the fiasco. In fact, this incident has brought surprise to all the people of Arunachal Pradesh, particularly for the young aspirants who are preparing for their the various posts in the Public Service Commission. This was really a shocking news to the entire state. Such type of incident or the scam being practiced in the commission was unexpected. Knowing that, our government has acted very seriously. As I said, they have instructed the police, and police has done their job. And the government, our Honorable Chief Minister, has stated very clearly that no corruption will be tolerated in any case. Dealing with iron hand, and no stone will be unturned to catch hold of those who are involved in this
scam. So, and he also said that nobody will be spared. All the accusers and all those people involved in the scam will be dealt with iron hand. Such is the strong, stand by the Honorable Chief Minister in this case. Over and above, despite the Capital Police investigation, our state government has also constituted special investigating team. The case has been handed over to the SIC, the State Investigation Cell. Over and above, another high-level committee was constituted, headed by the Principal Secretary as the chairman of the high-level committee, with a two-member Commissioner Health and Secretary Administrative Reforms. And they were given 15 days time to submit the high-level committee report. Over and above, furthermore investigations were done by the SIC, and very recently, 3 more people have been arrested by the State Investigation Cell. So, you might be happy to know that the prime suspect of this fiasco, the Deputy Secretary of Arunachal Pradesh Public Service Commission, and who was also Deputy Controller of Examination, he has been sent on forced superannuation as per the CCS conduct rule. Now, coming to the point, as you have rightly said, several organizations are seriously, asking the government why the board are not dismissed. The entire board should be dismissed. Yes, we agree and respect the feeling of the apex body student organization, APPSC, and other organizations who are seriously, thinking for the future of the young generations of our youth. I would like to say that Arunachal Pradesh Public Service Commission is a statutory body. They have their own laid down rules and regulations. They have their own norms. So the government can only guide, but they have their laid down rules. So government cannot, directly involve or reconstitute or dismiss entire member of the commission. So this is the case. I would like to, appeal that the law is taking its own course, and the government is very serious in, solving this case as early as possible. To speed up the case, the government of Arunachal Pradesh has already handed over and written to our country's premier investigation agency, CBI. So the case has already been recommended to CBI. So I am hopeful that justice will be done to all those people, and all the culprits or the accusers. Let's hope so. Let's hope so. Will be given punishment as. Let's hope so. Yes. No denying to the fact that a lot of steps have been taken. But again, the fact remains that such an incident shouldn't have taken place in the first place. Mr. Bem Maching, General Secretary of Arunachal Congress and spokesperson of the Congress, Mr. Maching. The state government here, the BJP here is maintaining, despite allegations like the opposition and the demands from the pressure groups, the BJP maintains that it is doing all possible to bring this case to its logical end as early as possible. So, fair enough, the Pema Khandu government has acted promptly, don't you think so? Or do you have other views? All right, we'll just try to fix the connection there with Mr. Maching. Well, before the opposition Congress leader there speaks, it's also an open fact. It's also an open fact, Mr. Semai,
that it's not just the student organizations and the pressure groups, but even the opposition parties like Congress have also raised concerns over the issue, the APPSC paper leak, and host of other issues, host of other charges as well. Of late, there have been concerns in the opposition ranks and also many other groups that corruption in Arunachal has risen since this government, the Pema Khandu-led government, took over, and as you know, almost everyone is pointing fingers towards the CM. Your thoughts on this? Yeah, see, we live in a democratic country. Every citizen has its own right to raise their voice, to speak, and to express of freedom is there, liberty of expression. But there are also certain limits of, words and the way of expression that we use as a citizen, concerned citizen of the country. But the thing has turned in Arunachal Pradesh into a very personal and very, it has turned to personal, like every political party is attacking our Honorable Chief Minister Pema Khandu. See, it is obvious. We expect that the people of the state should, give a constructive opposition. They should play a constructive opposition role in the state. Maybe Congress party, maybe any other political party which exists in our state. Whoever runs the government, he enjoys the people's mandate and the absolute majority of the legislature. Like in a democratic setup of the government, as I said, people may say so many things, this and that, but the appropriate way to find justice is the court of law. We cannot just go in the street and just shout like, for the sake of shouting without any valid reason. It's meaningless and baseless, what I feel. So all these allegations, all these, the other political parties which are, fingering out our chief minister, I feel it is all baseless and they have politicalized the issue just to tarnish the image of the Pema Khandu-led government in the state of Arunachal Pradesh. Mr. Bem Maching, of course, the APPSC paper leak issue, the state government, the BJP has maintained that it is doing everything possible to bring the case to the logical conclusion as early as possible. Do you buy that or do you have other views? Goswami sir, good evening. Good evening. ये अरुणाचल प्रदेश सिविल कमीशन, दिस इज वेरी सीरियस मैटर. ये जब से अरुणाचल जब आज़ादी है इसी से लेकर अभी तक भ्रष्टाचार चल रहा है. तो इस दिन का जो रिसेंटली जो हैपनिंग हुआ, इसका जो सीबीआई को स्टेट गवर्नमेंट पेमा खांडू रिकमेंड किया, हमारा तरफ से में विश्वास नहीं है. वो सीबीआई को रिकमेंड किया और स्टेट में इसको सन्यासी के लिए रिटर्मिन के लिए दे रहा है. सो वंस जो सीबीआई को रिकमेंड किया उसको रिटर्मिन देना नहीं चाहिए. ऑल स्टाफ को, एपीपीएससी स्टाफ को हटाना चाहिए और कार्रवाई करना चाहिए. यहाँ में दो काम कर रहा है. आई एम नॉट बिलीव दैट इट विल बी गुड. हम उसको विश्वास नहीं करता हूँ. या दो काम कर रहा है, एक रिकमेंड कर रहा है, एक यहाँ में देखिए अरेस्ट सुपरनेशन का ये जो रिटर्मिन का ऑर्डर निकल रहा है, इट इज वेरी मच डाउटफुल द स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, जिनके खिलाफ प्रूफ मिला है एटलीस्ट वो अरेस्ट हुए हैं, ये तो हम कह सकते हैं. 9 अरेस्ट हुए हैं अभी तक. और सरकार जो है सीबीआई को प्रूफ दे ही रही है, तो क्यों ना हम वेट करें इसके लिए बिफोर जंपिंग द गन एंड सेइंग कि सबको सस्पेंड करना पड़ेगा. ये डिमांड क्यों है? गवर्नमेंट कह रही है कि गवर्नमेंट भी एक दायरे पे काम करती है, एक रूल्स एंड रेगुलेशन पे काम करती है, आर्बिट्रेरली सबको सस्पेंड नहीं कर सकती. ये गवर्नमेंट का कहना है, ये बीजेपी का कहना है. इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? गोस्वामी सर, आपका चैनल का मैडम से मैं बोलना चाहता हूँ, ये जो
अभी सस्पेंड कर रहा है, ये 6 महीने का 5 महीने का बाद में ये सस्पेंड नहीं होगा, ऐसा या प्री रोमिंग होगा अरुणाचल में, फिर इसका जो टर्मिनेट नहीं होगा, सस्पेंड नहीं होगा, पनिशमेंट नहीं होगा। ये हमारा अरुणाचल प्रदेश का बीजेपी का गवर्नमेंट है, वो ऐसा वो एक नातंग देखा का ऑर्डर बनाता है। अभी अरेस्ट वो अरेस्ट क्या सच है, उसको टर्मिनेट करना चाहिए, सस्पेंड करना चाहिए, वो अभी नहीं करेगा। अभी वो ऐसा एक्टिंग देखा के सब छोड़ देगा, वो होने वाला नहीं है। लेकिन ये प्रूफ तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए कि हम सीबीआई को देना चाहते हैं, ये नहीं कि हम खुद कर रहे हैं, ऐसा ऐसे बिठाया। बट इसके जो मैग्नेनिमिटी को देखते हुए, इसके सीरियसनेस को देखते हुए इसको सीबीआई को दिया जा रहा है, एक सेंट्रल एजेंसी को दिया जा रहा है। स्टेट गवर्नमेंट तो ये नहीं कह रहा है कि हम खुद प्रूफ करेंगे इसको। दूसरे स्टेट में कोई भी बड़ा सा चार्ज हो, डिमांड होता है कि आप सीबीआई को सौंपें, तो ये ऑलरेडी गवर्नमेंट कर रही है। तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम कर रहे हैं ऑलरेडी, तो क्यों हमारे ऊपर फिर उंगली उठाई जा रही है? क्योंकि हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये केस को लॉजिकल कंक्लूजन तक लाया जाए। गोस्वामी सर, अरुणाचल का गवर्नमेंट जो है बोलने में अलग है, वो अंदर में अलग से काम करता है। ये जो अरुणाचल का जो कमीशन जो ईयर बाय ईयर इसका जो पिताजी मिलने के बाद वो बेटा मिलता है, इसका कितन किन मिलता है, ऐसा करते जा रहा है। इसका प्रॉपर्टी अरुणाचल में हर एक प्रॉपर्टी बनाते जा रहा है। इसका डिसप्रोपोर्शनल को प्रॉपर्टी को चेक करना चाहिए, उसको जल्दी से कार्रवाई करना चाहिए। हम अरुणाचल बीजेपी गवर्नमेंट को मैं ट्रस्ट नहीं करता हूँ, ये नहीं होगा। ऐसा झूठ मूठ में वो रिकमेंड कर रहा है सीबीआई को, वो पूरा रिकमेंड करना चाहिए, पूरा उसको टॉप टू बॉटम एग्जाम करना चाहिए, चेक करने देना चाहिए, सीबीआई को फुली ऑथोराइज देना चाहिए। या दो काम कर रहा है, सीबीआई रिकमेंड करता है या हमें संन्यासिया के लिए ऑर्डर निकाल के रिटायरमेंट का दे रहा है। ये क्या का सीबीआई का रिकमेंड है? आई एम वेरी मच डाउटफुल, आई एम नॉट बिलीव दिस गवर्नमेंट। सीएम पेमा खांडू के ऊपर भी कांग्रेस ने जो है सवाल उठाया, और काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपने आप को एंटी करप्शन वॉचडॉग्स कह रहे हैं, वो भी सवाल उठा रहे हैं सीएम पेमा खांडू के ऊपर। कांग्रेस इसमें क्या कह रही है? जो एपीपीएससी पेपर लीक है, डू यू हैव एलिगेशंस अगेंस्ट द सीएम एज वेल? और एंड द कांग्रेस हैज़ आल्सो इन द रीसेंट पास्ट मेंटेन्ड कि करप्शन बढ़ गया है अरुणाचल में, ये बीजेपी गवर्नमेंट लेड बाय पेमा खांडू आने के बाद। क्या आधार है, क्या बेसिस है इसके जो आप ये कह रहे हैं, बार बार जो ये आरोप लगा रहे हैं? यस, अरुणाचल जो है, अरुणाचल जब पेमा खांडू जब चीफ मिनिस्टर हुआ, यहाँ में 100% करप्शन हो गया। यहाँ में सड़क नहीं है, स्कूल नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, एवरीथिंग इसका नाम से सब अरुणाचल में पूरा गपला होकर बैठा हुआ है। यहाँ में कोई डेवलपमेंट नहीं है। इसलिए हम लोग बार बार बोल रहे हैं, इसका जो बोलने में, ट्विटर और फेसबुक में लिखने में डेवलपमेंट है नरेंद्र मोदी सर को बताने के लिए, लेकिन स्टेट का अंदर में पूरा जीरो है, कुछ नहीं है, ग्राउंड रियलिटी इज जीरो। तो आपको लगता है करप्शन बड़ा है पूरा अरुणाचल में इन द लास्ट 4 years? अरुणाचल में 100%, 99% भी नहीं है। रियली गोस्वामी सर, 100% अरुणाचल में करप्शन है, 100%। Well, I'll just get a quick reaction from Lysam Simai here. Lysam Simai, as we are just discussing, you know, everybody is pointing fingers at the Chief Minister. Now, when you said that it's a democracy, anybody can say whatever they feel like. Did you mean that if they have any hard evidence against the CM, then why are they not moving the court of law? Why are they just resorting to protests or or a march to Delhi? Are you trying to say that anybody has the right to move the court and let them do so if they have any evidence against the Chief Minister? Absolutely. There are many other ways of finding justice. If they are really serious about the corruption issue, if they have any clue or the witness, they can knock the door of the court. Definitely, the law of the land will do its own course of action. Land of the law will take its own course. BAM marching, बीजेपी का ये कहना है कि आप कह रहे हैं कि करप्शन 100% बढ़ गया है। जब से पेमा खांडू गवर्नमेंट आया, करप्शन 100% बढ़ गया है। अगर आपके पास प्रूफ है, यू आर फ्री टू गो टू द कोर्ट।
And it's a democracy. Anybody can accuse and allege anything. अगर आपके पास proof है तो आप court जाइए और take it to the logical conclusion. Because the government has been claiming that it has brought development to the state, and the opposition, if it thinks otherwise, it is free to knock the doors of the court. गोस्वामी सर, अरुणाचल में ऐसा है, नॉर्थ ईस्ट में यहाँ में आरटीआई के जरिए एविडेंस पूरा मिला और कोई सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में अभी केस जारी है। देखिए, अरुणाचल में एक केस को सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए 30 ईयर्स, 40 ईयर्स, 50 ईयर्स, एक केस आज तक इन लोग जस्टिस दिलाता नहीं है अरुणाचल में। उसको अरुणाचल गवर्नमेंट पता है, जो भी बोलेगा, जो भी एक्टिविस्ट बोलेगा, जो भी अपोजिशन बोलेगा, यू गो टू द कोर्ट। इनका एक ऐसा बहाना निकल गया। इसी कारण से इन लोग का जितना मंत्रीगण, इनका गवर्नमेंट जो है करप्शन में बिजी है, रेप में बिजी है, मर्डर में बिजी है। इसका आपका बाद में कोर्ट में जाओ बोलेगा, कोर्ट में वहाँ से कोई शीतल आएगा नहीं है। इसका एक केस का 5 लाख है, 2 लाख है, 20 लाख है। हमारा यहाँ का जनता कहाँ से पैसा निकल कर गवर्नमेंट को लाने के लिए सकेगा? या प्रोटेस्ट करने से रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसलिए बीजेपी का गवर्नमेंट बहाना है, आप प्रूफ है कोर्ट में केस शीतल होता ही नहीं है। यही है मेन पॉइंट। बैम माचिंग जी, चुनाव आ रहे हैं फिर से अरुणाचल में बहुत ही जल्दी। अब ज़्यादा वक्त बाकी नहीं है, हार्डली ओवर अ ईयर। क्या ऑप्शन है कांग्रेस के पास, क्या ऑप्शन है ऑपोजिशन के पास? आप कह तो रहे हैं कि करप्शन है, ये है, क्या आप उसको पब्लिक तक ले जा पा रहे हैं जो आपकी ये एलिगेशंस हैं, और क्या ऑप्शन है आज के डेट में? हाँ गोस्वामी सर, मैं आपका चैनल के माध्यम से मैं रखना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी इज़ बेस्ट, बीजेपी पार्टी इज़ बेस्ट, एनपीपी पार्टी इज़ बेस्ट। जो अरुणाचल का जो 60 एमएलए है, 54-56 एमएलए विधायक है, मिनिस्टर मंत्रीगण लोग है, ये लोग जब तक अरुणाचल में रहेगा, ये अरुणाचल का फ्यूचर है ही नहीं है। ये इसको हमारा अरुणाचल जनता समझ चुका है, इसको उकर के फेंकने के लिए रेडी है आने वाला दिन में। तो क्या आपको लगता है कांग्रेस के प्रोस्पेक्ट्स हैं? आपको अभी भी लग रहा है कि कांग्रेस के प्रोस्पेक्ट्स हैं? और आर यू लुकिंग इनटू एनी अलायंस, एनी प्री पोल अलायंस? क्या कोई बातचीत चल रही है? क्योंकि जिस तरह के कांग्रेस के हालात हैं, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में नहीं, थ्रू आउट द कंट्री, डेफिनेटली कांग्रेस को अलायंस की तो ज़रूरत पड़ेगी। आर यू लुकिंग एट एनी पोटेंशियल अलाई? विल यू रीच आउट टू पार्टीज लाइक द एनपीपी? ऑफ कोर्स सब बीजेपी के साथ ही जुड़े हुए हैं अभी अरुणाचल में। क्या कांग्रेस के पास ऑप्शंस क्या है? अरुणाचल में देखिए, अभी कांग्रेस का अलायंस करने के लिए डिसीजन नहीं हुआ। अरुणाचल प्रदेश में अभी जनता समझ चुका है, बेस्ट जो सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी अरुणाचल का डेवलपमेंट को आगे बढ़ाता है और हर जाति का, हर रिलीजियस का आगे बढ़ाता है, कोऑपरेट करता है, कांग्रेस ही आगे बढ़ेगा। तो हम विश्वास करता हूँ आने वाला का दिन में कांग्रेस का मैनिफेस्टो है अरुणाचल में चलेगा। मैं यही विश्वास रखता हूँ। Thank you so much, Bam Matching. Thank you so much, Laisam Semai, for your valuable inputs. Also to Ritum Tali, who joined us earlier in the show. Let's hope the issue gets resolved very quickly. Let's hope the probes ordered yield results. We'll take a very short break here. After the break, we'll go to Manipur, where the state government has released the draft liquor regulation policy, and there is again opposition to it. We'll find out what the cadre says about it.